Well, 3 days ago, Times Now exposed a story that no other channel dared to tell. We brought you the oppressed and the downtrodden voices of Dalits whose houses were razed and they were forced to live in jungles. Times Now's Mohit Bhatt travelled to Palamu in Jharkhand, where 50 families became refugees overnight in their own land as a rampaging mob razed their homes. We spoke to the Muslim community, the accused in this case, who say that this land belongs to the Madrassa, and they went on to deny that JCBs or bulldozers were used to raze their homes. Right after their claim, Times Now exclusively is going to bust these lies with the visual evidence of the JCB which was used. But listen in first to the denials. क्या हुआ? बहुत दिन से झोपड़ी था मुसर लोग, लेकिन बहुत साल भर 2 साल के लगभग हुआ था। मैंने सोचा कि उन लोग आज यहाँ कल वहाँ रहता है, चला जाएगा आराम से प्यार से। उन लोग के मैं बोला कि भैया देखो इतना जमीन किधर भी है। तुमने बोला? हाँ, मैंने नहीं बोला, गांव के लोगों ने, सभी लोगों ने, समाज में बोला कि कहेगा तो मैं बोर धसा करके रूम बना कर दे दो, लेकिन ये मदरसा की जमीन है, प्लीज खाली कर दो। ये जगह पे समतल कैसे हुई? मुझे सर देखिए सर, मैं ये जगह समतल कैसे हुई? मकान हटे कैसे? बुलडोजर चला ना? जगह समतल कहाँ दिख रही है आपको? नहीं तो कैसे हटे? ये कैसे हटे? बुलडोजर नहीं चला यहाँ। ये मीडिया लोग दिखाया बुलडोजर चला है। बुलडोजर आप नहीं बना रहे, बुलडोजर चला है ना? एक मिनट, मालूम नहीं बुलडोजर का नहीं पता। सर एक मिनट, हाँ बताइए। मीडिया लोग दिखाया 50 घर। नहीं, ये पूरा दिखा रहे हैं हम पूरा लाइव है, तभी हम आपके पास आए हैं। मीडिया लोग दिखाया 50 घर। मुझे बताइए, प्रशासन, आप प्रशासन के पास गए थे? आप प्रशासन पे गए थे? आप प्रशासन पे गए थे? प्रशासन पे गए? नहीं, प्रशासन को बोला था। आप बताइए ना, आपने कैसे तोड़ दिया जमीन? हाँ, हम लोग को सबका धार में लेकर बुलडोजर। अरे अगर जमीन भी है तो बुलडोजर नहीं चलेगा ना। So there you see again they are arguing with the police over here. Meanwhile, Times Now has accessed the Palamu Clincher. Visuals accessed by Times Now, those you can see on your screens, expose the fake narrative. Pictures which expose that JCB, in fact, that specific JCB too, was used to raze Hindu homes and even a temple. The Hindus are being forced to live in a makeshift house in the jungles now in this rainy season. They are being persecuted in their own lands. Listen in to their anguished voices. ये देखिए सब सामान पूरा खोह में, ये सब हम लोग के सब मुसहर लोग के सब था और गाड़ी एक ट्रैक्टर और नहीं है। सब ये सब गरीब बच्चा लोग सब ये सब काट के मगज है, पूरा फैमिली है नानने वाला ये चावल। अब इन लोग के साथ सर बहुत घातसा हुआ है। इस पर सर फांसी की सजा इन लोग किया जाए, 20 वर्षा में पूरा परिवार के ढकेला जाए। सर ये हमारा रिक्वेस्ट है, आपसे विनती है डीसीपी साहब, हमको ये सवाल है कि उन लोग के हम जान नहीं बख्शेंगे। ये देखिए पूरा, और देखिए और गड्ढा में कैसे ढकेला गया है। और देखिए ये सामान है, ये जो कोठी वोठी सब है। और देखिए सब पूरा टीवी टावर सब है सर, ये सब है। देखिए इन लोग के सब रहने, ये सब बढ़िया से सब ग्राम मुरू मातू के सब रहने वाले मुसहर सब। देखिए वहाँ वो जो बूढ़ा है उसको बुरी तरह से झोंड में फेंका गया है सर। देखने की चीज़ें देखिए वो पेड़ के पास नीचे, और यहाँ पर कोई पानी और दाना देने वाला कोई लोग नहीं जुटता है सर, जहाँ पर इन लोग ऐसा हादसा किया है। और देखिए ये सब है, ये सब अपना जो टीम बनाए हैं थाना पर, जो एसपी साहब जो हम लोग के बाबू छोटा बोले कि आना है कल, बच्चा लोग को खोह में हम पता करके सबको लेके जा रहे हैं। आज 30 तारीख के हम लेके चले थाना पर एसपी के पास। और देखिए यह है सब फैमिली के दुर्घटना जो सीन पर आप देख रहे हैं। देखिए यही सब परिवार है मेरा साथ, ये सब जोल्हा मुरू मातू हम लोग ग्राम रहने वाले सब मुसहर हैं। इन लोग के साथ बहुत बुरा घातसा हुआ है भैया। देखिए मार के तोड़ दिया है सबके, अब यही जंगल में फेंक दिया है सब। बहुत तरह से देखिए खो है, ये देखने वाला चीज है भैया, देख लीजिए। ये देखिए कैसे मार दिया है, देखिए सबके बाल बच्चा के एकदम बुलडोजर में डाल दिया है। यहाँ कोई पानी देने वाला नहीं है, कोई खाना देने वाला नहीं है सर। देखिए गदकी गाछ का नाला नूली में गाड़ के मारा है सर। ये देखिए जंगल है, यहाँ कोई बस्ती कोई पानी देने वाला नहीं है। ये देख लीजिए ये गड्ढा है, इस गड्ढा में डाल दिया है सर। ये देखिए यही गड्ढा है, ये सब बच्चा सब रो रहा है सर। देखिए ये सब के मुआ दिया, सब पीट के बर्बाद कर दिया सर। कोई सबूत देने लायक हमको नहीं छोड़ा है सर। हम लोग के डेरा टपाड़ी सब निपाता कर दिया है, बासन बर्तन सब उड़ा दिया है सर, सब ले गया है, कुछ नहीं हम लोग के पास छोड़ा है सर। हम लोग की तरफ से रिक्वेस्ट है एसपी साहब की इन लोग के फांसी की सजा दिया जाए।
Well, it's heart-wrenching to hear the cries of the children, the empty, the desperate pleas which are being made by these Hindus. Let me go across to Mohit Bhatt, who spent his time with them. Mohit, you have confronted those who have been accused of making these people homeless. They are claiming that there were no JCBs, no bulldozers which were used to forcibly grab upon this land. However, you've managed to access not just testimonials of the victims, but also the picture that we can see on our screens of that JCB. What is the truth? Well, Meghna, first of all, I'd like to tell our viewers that it's been 5 days that these people, these Mahadalits who were displaced from their land, they are still living in an old dilapidated, old Thana building of Pandu police station. They have still not been accommodated anywhere else. Now, the administration says they will be accommodated soon, but as of now, between 5 days, they are in the old Thana building of Pandu area. Now, coming back to the story, it's really heart-wrenching and shocking, given the fact that how their houses were being razed by the goons over there who came from the Muslim community, and they said that the land belongs to Eidgah, but the administration and the government say it's a land dispute. BJP says the land belongs to the government, but anyhow, even if it's a land dispute, nobody gives anybody right to raise anybody's home. There are courts in these countries. There is a police. There is an administration. You can approach them if you have the valid papers. You cannot take law into your hand. What these Mahadalits have been telling me is that they were completely geared out by around 50 to 100 people, and they were beaten up, and they were packed in trolley, and they were sent into jungle. Remember, as of now, it's raining here in Palamu. From past 2 days, it's been raining in Palamu, and remember and imagine the plight of those children, those elderly who were beaten up without food, without water. They were sent to jungles. It was raining at that particular time. So look, imagine the plight of those people. Like women were crying, elderly were crying, children were crying, and still they have not been rehabilitated. While if you talk about the administration, they are in control of situation. They are providing food and shelter and other accommodations to them. But the question is, when exactly all these people will be arrested who took law into their hands? Now, when I confronted the people over there, the Muslim community members, they said JCB was not used. But yes, Times Now has exclusive picture of the JCB that was used to level the ground after the eviction of these people. So the lies have been busted. Now it's upon the administration what action they would be taking, because it's a very serious issue, and we will keep on following this story, given the fact that how we have exposed the administration over there. We have exposed how the Mahadalits and the Musar community were being completely physically assaulted. They were left in lurch. They were sent to jungle in trolley. Imagine women, children are sent to jungle without even administration knowing it, by the goons of that particular area. So this is something very shocking. We have to wait and watch what action would be taken against the people under whom name the FIR has been registered. 3 of them have been arrested, but 150 are still absconding. Back to you. It's unfortunate. 150 still absconding. Meanwhile, you have the proof there, that JCB which raised Hindu homes, that you can see for yourself. Thank you so much, Mohit, for getting us the story that no other channels cover.